Good evening students, hope you all are good. Today we are going to start chapter number 3, factors and multiples. Start with factors. Now what are factors? All the numbers that can divide a given number without leaving a remainder are factors of that numbers. Means वो सभी numbers जो किसी given number को divide कर सकते हैं without any remainder. That all the numbers are factors. Now we have two methods for finding factors. First one is by multiplication and second is by division. For example, let's take a number 30. Now start with 1. 1 multiply 30 equal 30. Okay. Now 2. 2 multiply 30 divided by 2, that is 15. So 2 multiply 15 equal 30. Now comes to 3. 3 multiply 10. 3 10 ja 30. Now 4. But 30 is not divisible by 4. So take 5. 5 multiply 6. 5 6 ja 30. After 5, 6. But 6 is already here. So stop our process here. And 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. These all are these numbers are factors of 30. Now comes to by division. Number is 30. 30 is divided by 1. That is 30. Okay. Now 30 divided by 2. What number will we get? 15. 15 2 ja 30. Now 30 divided by 3. That is 10. Good. Now 30 divided by 4, but not possible. So take 5. 30 divided by 5, that is 6. 5 6 ja 30. Now after 5 6, but 6 is here. So we do same process in opposite way. Means this is 30. Now divide by 6 and will become 5. Divide by 6 equal 5. In this 30 divide by 10 equal 3. These all opposite. Now 30 divide by 15, that is 2. And in the last 30 divide by 30. This is 1. So 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. These are the factors of 30. Now come to the properties of factors. What are the properties of factors? First one is the number 1 is a factor of every number. Means 1 सारे numbers का factor होता है. Second one is every non-zero number is a factor of itself. Means every non-zero number अपने आप का factor होता है. Third one is the smallest factor of a number is 1 and the largest factor is the number itself. Means किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है. ओके. नाउ फोर्थ, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. मीन्स किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उस नंबर से लेस देन मीन्स कम होगा और इक्वल या फिर इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं होगा. ओके. नाउ लास्ट, अ नंबर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. ओके. काउंटेबल होते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स two or more numbers is called their HCF. Now understand this with an example. Find the HCF of 16 and 20. You have to find the HCF of 16 and 20.
First, start with factors of 16. You can find factors by division or by multiplication as you wish. Here I am doing with multiplication. Start with 1. 1 multiply 16 equal 16. Okay, now 2 multiply 2 8 जा 16. Now 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो लेट्स टेक 4. Now 4 4 जा 16. Now the number is repeated, so stop here. These are the factors of 16. Now comes to factors of 20. Start with 1 multiply 20 equal 20. 2 multiply 10. 2 10 जा 20. 3 के टेबल में 20 नहीं आता है. ओके, सो 4 4 5 जा 20. And then 5 5 4 ja, this is comes. Okay, now factors of 16. What are the factors of 16? 1 comma 2 comma 4 फिर 8 and 16. These are the factors of 16. And factors of 20, that is 1 2 4 5 10 and 20. Now find common factors. Commons means जो दोनों के factors में common है. 1 इधर भी है and इधर भी. So 1 is common factor. Then 2 is common. Then 4 is also common. Then no one. So these are 1, 2 and 4 are common factors. Now HCF means highest, means सबसे बड़ा. अब highest में common factors में आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है. 1 2 4 सबसे बड़ा कौन है? Highest 4. So HCF will become 4. Next topic is tests of divisibility. We can find out if a given number is divisible by another number without actually dividing. There are certain tests that we carry out to check for divisibility. These are known as the tests of divisibility. These tests will also help us to check whether a number is a factor of another number or not. Means हम इन टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग. ओके, नाउ हेयर आर द टेस्ट वी यूज टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5, 9, 10 and 11. Here are the rules for tests. First one is divisible by 2. Rule. Let's see the rule. The digit in the ones place should be 2, 4, 6, 8 और 0. means even number. means किसी भी नंबर की वंस प्लेस डिजिट शुड बी इवन. सी एग्जाम्पल जैसे 38, 240, 3574. इनकी वंस प्लेस डिजिट इज इवन. ओके, नाउ डिविजिबल बाय 3. The sum of the digits of the number should be divisible by 3. मीन्स किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 6543. नाउ ऐड दीज डिजिट्स. 6 + 5 + 4 + 3 that is 18. Now 18 is divisible by 3 or not? 18 is divisible by 3. So this number will also divisible by 3. This is another example 84,573 and the sum of the digits is 27 and 27 is divisible by 3. So this number also divisible by 3. Now divisible by 5. The digit in the ones place should be 5 or 0. मीन्स अगर आपको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वंस प्लेस की डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0. इन दोनों में से एक. सपोज 90, 245, 4260
and 92, 95, 60, 75 means 0 or 5. One's place digit should be 0 or 5 only. Now divisible by 9. The sum of the digits of the number should be divisible by 9. This is same like 3. Means sum of the digits if divisible by 9, so number also divisible by 9. 2169 and the sum of digits is 18. Now 18 is divisible by 9. 9 to 18. So this number also divisible by 9. And another example is 31,797 and the sum of the digits is 27. And this is 27 divided by 9. So this number will also divide by 9. Now come to the divisible by 10. The digit in the ones place should be 0. Means किसी भी number की ones place digit should be 0. That only that can divisible by 10. Here 90, 180, 3420. All the ones places should be 0. So these are the divisible by 10. Now come to divisible by 11. The difference of the sums of the alternate digits of a number should be either 0 or a multiple of 11. Means किसी भी number में, suppose this is a number 2,45,762. Now alternate digits. Let's take 2, then skip 6, take 7. 2 plus 7, then skip 5, take 4. 2 plus 7 plus 4. 4, 7, 2. That is 13. Now skip digits. That is 6, 5 and 2. 6 plus 5 plus 2, that is 13. Now find difference of these numbers. 13 minus 13, that is 0. ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर अ मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स 11, 22, 33 कुछ भी. ओके, सो दैट नंबर विल डिविजिबल बाय 11. दिस इज द रूल फॉर 11. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. फर्स्ट, प्राइम नंबर. Any non-zero number that has only two factors, 1 and number itself, are called prime numbers. Means प्राइम नंबर या तो 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या खुद के टेबल से, अपने आप के टेबल से. ये और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है. दैट इज प्राइम नंबर. नाउ कंपोजिट नंबर. अ नंबर विच हैज मोर देन 2 factors इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर. मीन्स कंपोजिट नंबर 1 के टेबल से, खुद के टेबल से तो डिवाइड हो गई, बट ये किसी और टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए. दैट इज कंपोजिट नंबर. नाउ हेयर आर सम नंबर्स. नाउ चेक दीज नंबर्स वेदर आर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. फर्स्ट वन इज 6. नाउ टेल मी 6 किसी और टेबल में डिवाइड हो सकता है किसी और टेबल से? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2, 3. सो दिस इज कंपोजिट नंबर. मीन्स C for composite. 11 इज प्राइम और कंपोजिट. 11 तो सिर्फ 1 से टेबल से आता है या फिर 11 से. सो दिस इज प्राइम नंबर. नाउ 5 अपने ही टेबल में आता है और 1 के में. सो दिस इज ऑल्सो प्राइम. नाउ 20 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है, राइट. सो दिस इज कंपोजिट नंबर. 23 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, ये अपने ही टेबल में आता है या 1 के में. सो दिस इज प्राइम नंबर. एंड 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ये तो आता है. सो दिस इज कंपोजिट नंबर. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन. Expressing a number as a product of its factors is called prime factorization. When we factorize in such a way that every factor is a prime number, we call it the prime factorization of the number. Let's take number 36 and factorize this. Start with 2. 2 multiply 18 because 18 2 ja 36.
Now this is prime number and this is composite number. So again factorize 18 with 2 because 18 is divisible by 2. So 2 9s are 18. Okay, this is prime number and this is composite number. Leave prime numbers, consider only composite number. Now factorize 9. 9 is not divisible by 2, so this will be divisible by 3. Now 3 multiply 3. 3 3s are 9. Now this is prime and 3 is also prime. So stop this process. Here 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. This is the prime factorization of 36. Here the another method of prime factorization. Let's start with 2. Write 2 here and 36 divided by 2, that is 18. 18 will be right here. Okay. Now again divide by 2. 2 9s are 18. Now 9 is not divisible by 2. So 3 3s are 9. Okay. Now 3. So 3 will divisible by 3. So 3 1s are 3. When 1 comes means our process is complete. So the prime factorization of 36 is 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 3. This is prime factorization. You can check by multiplication of these numbers. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 and number is 36. So this is correct. And all the factors are prime numbers. 2 is prime and 3 is also prime. So this is prime factorization.